तो भाई हम आ चुके हैं वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में मैं एक क्लॉक स्क्रैम्बल को कुछ अलग अलग क्लॉक एडवांस मेथड से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। मतलब मैं नहीं दिखाने वाला, बहुत इंडिया के कुछ टॉप क्लॉक सॉल्वर्स करने वाले हैं, क्योंकि मुझे सभी क्लॉक मेथड्स आते नहीं है। जैसे 7 साइमल फ्लिप है, 7 साइमल बी पॉल, 7 साइमल टॉमी, इतने सारे मेरे को आते नहीं है। मेरे को नॉर्मल फ्लिप 7 साइमल फ्लिप एंड 7 साइमल बी पॉल, इन तीन आते हैं। मतलब टॉमी भी आता है बट भूल चुका हूँ मैं, सीखने वाला था बट मैंने सीखा नहीं। तो इसमें क्या होगा, एक ही स्क्रैम्बल को मैंने हर एक क्लॉक सॉल्वर्स को दिया हुआ है। तो वो आप लोगों को बताए हुए हैं कि मतलब कैसे वो सॉल्व करते हैं, मेमोराइज कैसे करते हैं एंड ऑल। तो सबसे पहले एक नॉर्मल फ्लिप मेथड से शुरू करने वाले हैं हम, जो कि आप आगे वीडियो को देखने वाले हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ऐसे वीडियो इंडिया में कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस चैनल को अगर आप आए हो सब्सक्राइब करके रखना, वरना बाद में नहीं मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्लिप मेथड आप देखो, राम तक्कर ने मतलब वो सॉल्यूशन मेरे को दिया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनको कि मतलब वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब आने के लिए मान गए वो। काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, बढ़िया है। तो वो देखो आप। और हाँ, स्क्रैम्बल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना। एंड या फिर यहाँ है, देख लो आप। यही स्क्रैम्बल है, सभी को दिया हुआ है। बट लास्ट में जो एक सूडो है, मतलब टॉमी 7 साइमल, सूडो 6 साइमल है, जो उसका एक अलग स्क्रैम्बल है, क्योंकि इस स्क्रैम्बल में वो केस नहीं था जो कि सूडो 6 साइमल में चाहिए होता है। तो वो अलग स्क्रैम्बल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी देख लेना। एंड आगे देखो। Hey guys, I'm Ram. For those of you guys who don't know me, I'm a 2x2 main from India, and I also have a YouTube channel with over 10,000 subscribers. I haven't done the normal flip method in quite a while actually, so this might be a bit of a bad solve, but anyway, I don't really see any edge skips or anything in here, so what I'd start by doing is just my regular pin order. So match these two, match these two, match these, do that. And then solve this, then I do an x2 flip like that, then I do pretty much the same thing, solve this, solve that, and then solve this to match up the cross, and then I just solve the corners normally. And then just align everything, and that's solved. तो गाइस, तो आज मैं आपको 10mm मेथड से क्लॉक कैसे सॉल्व करते हैं दिखाने वाला हूँ। तो इस मेथड में पहले सेंटर क्लॉक सी डायल को यू डायल से मैच करना है, फिर यू आर डायल को आर से मैच करना है, फिर ये दोनों यू एंड सी डायल को एल डायल से मैच करना है। फिर ये जो एल यहाँ बनता है उसे यू कैन मैच इट टू डी या आर। सो फिर यू कंप्लीट योर क्रॉस, x2 flip, C to D, same as the first simul. And now you see we have got a skip here. Now we have to match this to this. Usually we also will need to match this dial to this dial. फिर having this L, match it to any of the two edges. And after you do so, match it to the other. Then उसके बाद UR क्लॉक को DL से मैच कर UL को DR से मैच करके बैकस्लैश पिन अप, फिर सॉल्विंग द एंटायर क्लॉक. I usually average around 5 seconds using this method. तो मैंने उसी स्क्रैम्बल को मेरे क्लॉक में कर लिया हुआ है। तो मैं बी पॉल 7 साइमल नो फ्लिप से सॉल्व करता हूँ। आगे तुमने नॉर्मल फ्लिप एंड 10mm मेथड देखा, अभी तुम बी पॉल देख रहे हो। नेक्स्ट तुम शायद फ्लिप देखो या टॉमी देखो, जो भी मैं डाल दूँ एडिटिंग में। तो वो क्या बोलते हैं, तो मैं फटाफट शुरू करता हूँ। वही स्क्रैम्बल मैंने कर लिया है, अगेन स्क्रैम्बल डिस्क्रिप्शन में कर लेना। तो मैं मेमोराइजेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें कोई भी क्लॉक मेथड सिखाने नहीं वाला, मैं बस तुमको बस एग्जाम्पल देने, मतलब एक एग्जाम्पल एंड छोटा सा कंपैरिजन बोल सकते हो कि क्लॉक मेथड से तुमको कौन से क्लॉक मेथड से सॉल्व करना चाहिए एंड ये। तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एंड तुम भी अपने क्लॉक पे यही स्क्रैम्बल करके हर एक मतलब
क्या बोलते हैं, हर एक मेथड से आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा बेस्ट लगे। तो मैं यहाँ से मेमोराइजेशन स्टार्ट करता हूँ, जो कि है 013 मेमोराइजेशन मेरा हो गया। तो मेरा पिन ऑर्डर पिन ऑर्डर जो कि है DL पिन ऑर्डर, पिन फर्स्ट में रहेगा। एंड 0 मैं इस यहाँ से लगाऊंगा एंड 0 1। अब मैं 3 इस पिन को डाउन करके 3 यहाँ से लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर एक 2x2 ब्लॉक बनाऊंगा। 0 1 3 5 D था, तो यहाँ पर 5 मैं यहाँ से लगाऊंगा। मेरा 5 मतलब -5 एंड D मतलब +4 है, तो मैं D यहाँ से लगाऊंगा। अब इस क्लॉक को इस क्लॉक के साथ मैच करके लास्ट का जो लेटर है इस क्लॉक को इस क्लॉक के साथ मैच करने के लिए -1 था, वो करूँगा। इस वाले पिन को डाउन करके ये जो 2x2 ब्लॉक है इसको इन दोनों क्लॉक के साथ मैच करूँगा एंड इसको मतलब यहाँ पर एक ऐसा सा यहाँ पर एक 2x2 ब्लॉक बनाऊँगा जो कि ऐसे बनेगा साइमल मूव से, अगर हम देखें, जो कि बन गया। अब डायगनली पिन ऊपर करेंगे, मतलब फ्रंट स्लैश एंड सारे को 12 में, और बैक में भी मेरा सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट मेथड देखो एंड वीडियो के लास्ट में मिलता हूँ। So this is the scramble. So whenever I get a scramble, I look for the least amount of difference between the center clock and one of the edge clocks. So here there is a difference of 1 and there's a difference of 1 here as well. So I will choose between these the angles by calculating the second move. So the first move here is -1, which is this to this, which is -1. And then here the second move is this to this plus this to this, which is 2 minus 4, which is -2. From this angle, the first move will be again -1, this to this, and then the second move will be this to this plus this to this, which is 3 minus 3, which is 0. So since 0 is better than any move, I will go by this angle. So the memo here will be first move -1, then second move 0, third move will be this to this -3, fourth move will be this to this, which is 3, then the fifth move will be this to this up and then apply to this, which this will apply a 6 on this, so this will be 0, and then flip the clock, then plus 0 plus this to this, which is 6, plus this to this, which is 6 plus 3, which is 9, and then we have to negate this number, so change the sign 9 to -9, and then -9 on the clock is just a 3, so the fifth move will be a 3, and then the sixth move we repeat the same process, except we don't change the sign. So this to this is -4, apply to this will come here, which is a 2, then we flip, then add this to this, which is 2 plus 1 3, and then add this to this, which is 3 plus 5, which is 8, which is a -4. So the memo here will be -1 0 -3 3 3 -4. So for the execution, this is I will set my pins according to what I need in the inspection, and then I'll do the first move, simul move, -1 and then 0 on this dial, then pin down, then -3 on the left side, 3 on the right side, then again pin down, match this to this and match the center to the top, then pin up. I'll do the fifth and sixth move which we memorized, that will be 3 and -4, then pin down, center to this corner to this edge, then pin up, this to this to this, then pin up, and everything goes to 12 o'clock, and as we can see the clock is solved. ठीक है, तो ये हमारा स्क्रैम्बल है और
ये दो डायल्स और ये दो डायल्स का डिस्टेंस बहुत कम है, जिससे ये पहला टर्न काफ़ी छोटा होगा और हमारा 6th टर्न ये साइड से छोटा होगा। तो 2 हाफ टर्न्स में हमें एक सिंगल मूव करना होगा, जो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से मैं मेमोराइजेशन चालू करता हूँ अपना। 0 B6 3 0 B6 3D। ठीक है, तो फिर एग्जीक्यूशन करता हूँ। 0 -2 6 3 -4। और मैं ये टर्न का बात कर रहा था तो पहले स्थित के लिए, क्योंकि ये सिंगल टर्न होगा और फिर ये भी सिंगल टर्न है तुक्के से। तो इसके बाद फाइनल मूव और फिर हो गया। I'll be explaining how I would do the scramble using the pseudo Zhang method. So quickly I'll just tell you a bit about it. So first of all, I would like to say that I only know 2 cases, and this is one of them. This is called the L case, as there is this block. And yeah, pseudo Zhang, there are many different cases and you cannot use it every single solve. Basically what you end up doing is you reduce a 7 simultaneous scramble and do a special memo system and end up reducing it down into a 6 simul system, but you use a different pin order and some other stuff. So I'll just take you through it and I'll show you how I memorize this specific case. I start off by seeing what does this clock need to do to reach here, which is a 1. If I do a 1 here, they start matching, so it's a 1. Now I flip it over and see what does this need to do to reach here, which is 2. So that'll I'll add them up and that gives me 3. Now keep in mind, this is out of all of the cases, there are only 2 cases, the ones which I know, which I only have to do 4 letters or numbers which I have to memorize. Other cases I have to memorize 6 numbers / letters. So my first number is 3, here to here and here to here. That's 3. Now second one is here to here. Once again, here to here, which is 2. So so far I have 3, 2. After that, I look at what does this clock need to do to reach here, and that's a -3. If I did a -3, they would not be matching. Now what I need to do is I need to imagine -3 happening on this clock, and that gives me a position of 8 o'clock or -4 o'clock, and I'll keep that in mind. And now I'll flip it over and I'll see what does this one need to do to get to this one, and that's -1. So if I add them up, I get -5. And now that's not it. Now we also need to multiply it by -1, which gives us 5. So far I have 3, 2, 5. Now the last digit of memorization is to look at what this clock says, and that's -5. I need to flip it over and I need to add here to here. So this takes 2 to get to here, and I add 2 to -5. That gives me -3. And now here to here, that's -3. So I'll add them all up and that gives me 6. So I'll just confirm the memorization. Okay, so I made a slight error. What I meant to say is, for the last digit, I don't just straight away take this. I look at here to here. That's 1. And now I imagine 1 happening here. That gives me -4. I add it to this 2 and here. So that result is -5. So my final memorization is 3 to 5 -5. And now I'll start executing. So I'll start off by doing 3 here and 2 here. Then I'll come here and solve this 2x2 block. And now, now I'll do my 2 numbers, which is 5 -5. And now I'll make a 2x3 block here. And now make a 3x3, whatever, this block. And then I'll do the last move, which is the AUF. Anyway, that's pretty much it. Thanks for watching.